Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 13 and the name of our unit is Things Around Us. And today the lecture is lecture number 5 and in this lecture we are going to study about plants are different. कैसे जो मुख्तलिफ पौधे आपने आइडेंटिफाई किए थे प्रीवियस लेक्चर में कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं आज आप इस बारे में जानेंगे. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that what you need to do is you need to look at these pictures and then you need to answer. So my dear students, name some of your favorite plants. Name some of your favorite plants. For example, I like rose plant, jasmine, I like apple tree, mango tree. So these are my favorite plants. Quickly pause the video and name your favorite plant. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. For this activity, what you will do is look at these pictures very carefully and then tell me, do you have plants in your house? जैसे मुख्तलिफ ये पौधे हैं और कुछ जो पौधे हैं हम गमलों में रख के फ्लावर पॉट्स में रख के अपने घरों के बाहर लगते हैं या हमारे जो लॉन हैं उनके अंदर हमने कुछ जो है वो पौधे लगाए होते हैं. तो आप बताएं कि आपके घर में पौधे हैं. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हिच इज योर फेवरेट प्लांट. तो आपके घर में जो मुख्तलिफ पौधे अगर आपने लगाए हैं तो उनमें से आपका पसंदीदा पौधा कौन सा है. जैसे मेरे घर में काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, कुछ पे फूल है लगते हैं, कुछ पे एक दो फल वाले पौधे भी हैं, जैसे इंजीर का दरख्त है मेरे घर में. इसके अलावा मुझे जो सबसे ज़्यादा दरख्त पसंद है, पौधा पसंद है, वो है लीमू का पौधा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लीमू लगते हैं और लीमू जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. सो लेमन प्लांट इज़ माई फेवरेट प्लांट. सो क्विकली नेम योर फेवरेट प्लांट. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly look at today's objective. So, आज का SLO जो under discussion है, it states that the students will be able to recognize the difference between the plants they see around them. So, जो बच्चों ने पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ पौधों को आइडेंटिफाई किया था, अब बच्चे जो है इन्हीं पौधों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि कैसे जो है वो एक पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक perspective. Allah says in Quran, He it is who spread the earth for you and made its path for you and sent down water from the sky and then through it we brought forth many species of diverse plants. So my dear students, कैसे जो है अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि आसमान से बारिश बरसती है, उससे मुख्तलिफ पौधे उगते हैं और हर पौधा जो है वो दूसरे पौधे से मुख्तलिफ है. There is diversity of plants. कुछ plants बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ पे फूल लगते हैं, कुछ पे फल लगते हैं. So they are different from each other. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly answer and tell me, name some parts of the plant. आपको पौधे अपने के नजर आते हैं तो कुछ पौधों के जो हैं वो पार्ट्स के नाम बताएं, जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स. सो दीज आर सम नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. इसके अलावा फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ प्लांट. Okay, my dear students, now for reading, I request you all to please open page number 110 in your GK1 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly move forward towards the reading. What you need to do is put your fingers where I will read. Okay, my dear students, plants are different. Plants are different. All plants do not look like the same. Some plants are small. Some are tall. The stems, leaves, flowers, height and growing place of plants may be different from each other. So my dear students, जो plants हैं वो एक दूसरे से देखने में भी मुख्तलिफ लगते हैं. इसके अलावा कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के ऊपर फूल लगते हैं, कुछ के ऊपर जो है फ्रूट्स लगते हैं, कुछ के ऊपर वेजिटेबल्स लगती हैं. सो कुछ की हाइट डिफरेंट होती है, कुछ का जो ग्रोइंग प्लेस है वो डिफरेंट होती है. कुछ जो है वो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो पानी वाली जगह पर ग्रो करते हैं, कुछ हमारे गार्डन्स में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं. तो इस तरह से उनकी ग्रोइंग प्लेसेस भी डिफरेंट हैं.
So my dear students, now look at these plants and let's read about them. Here you can see this plant has flowers on it. इसके leaves जो हैं वो dark green color के हैं. ये plant जो है इसके ऊपर कोई flowers हमें नजर नहीं आ रहे. जो leaves जो हैं वो इस plant से काफी different है. So jasmine plant has short height. It bears flowers. Some plants have small leaves. और जो कुछ पौधे होते हैं उनकी leaves बहुत छोटे छोटे होते हैं और उन पे flowers भी नहीं लगते. Next is rose is also a small plant. Rose stem is thin and green. So here you can see two plants. इसके flowering plant है. It is rose. ये commonly आपको नजर आता है. इसके जो इसका stem है वो बहुत ही पतला होता है, छोटा सा होता है और ये जो है it is also a small plant. इसके अलावा ये देखें आप इसका stem यहाँ देख सकते हैं. It is very thin and green. Next is here you can see a date palm tree और इसका जो दरख्त की जो तना है, इसका जो stem है, it is very thick and woody, brown color का है. Leaves जो है वो इसके rose से बहुत different है and it is a very tall tree, very tall plant. So देखें कि कैसे जो है दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है. Both are plants but both are different. Next here you can see this is a fan palm or fan palm is a small plant but has big leaves. So fan palm जो है ये एक छोटा पौधा होता है, बहुत बड़ा दरख्त नहीं होता. इसका जो stem है वो green और thin होता है, लेकिन जो इसके ऊपर leaves लगे होते हैं they are very big. So plants are different. Some are small, some are large. Some have thin and green stem. Some have thick and woody stem. Some have very big leaves and some have small leaves. So my dear students, some plants have different growing place. Some grow in dry place and some grow in moisture place जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, moisture ज़्यादा होता है. So here this is how you can see the plants जो है वो एक दूसरे से कैसे बहुत ज़्यादा different होते हैं. Some are flowering, some are non-flowering. इन्हीं के कुछ पे फूल नहीं लगते और कुछ पे जो हैं वो फूल लगते हैं. So this is how plants are different from each other. So my dear students, now is the time for evaluation. Quickly answer the questions, listen to them very carefully और आपने इनको orally answer करना है. So question number 14 it is, which features in plants are different from that of animals? Plants do not move from one place to another. Animals can move from one place to another. इसी तरह इनके जो body parts हैं वो एक दूसरे से different होते हैं. So this is how plants and animals are different from each other. Plants do not need food, but animals need food. Next, question number 15. What differences occur in stem of different plants? Some stems are thin and green. Some stems are very thick and woody. Some stems are very tall. Some stems are very short. Then how do leaves of various plants differ? So some leaves are extremely big. Some leaves are very small. Some leaves are thorny, जैसे कि cactus के जो है वो leaves नहीं होते, उसके ऊपर जो है वो कांटे लगते हैं. So this is how leaves of different plants are different from each other. So number 17 question is, are flowers present on all plants? क्या तमाम पौधों पे फूल लगते हैं? No, all plants do not have or do not bear flowers. Number 18, are all plants same height, of same height? क्या तमाम पौधों की एक जैसी हाइट होती है? No, some plants are very big. They have big height. Some plants have very short height. So this is how plants are different from each other. Okay, now my dear students, let's quickly move forward towards the practice. For practice, you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. So my dear students, what you need to do is write down your name and your class and then things around us. हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ चीजें हैं, we will talk about that. What are the features in which plants are different? So plants एक दूसरे से कैसे different हैं, आप वो लिखेंगे. Some are tall, some are short. इसी तरह आप leaves के बारे में लिखें, stem के बारे में लिखें. So this is how you will write the characteristics, how they are different from each other. So identify circle and circle features in which following plants are different. ठीक है, अब आपने उन features को identify करना है जो एक दूसरे से different है. ठीक है, stem different है, yes. Leaves different है, yes.
और फ्लावर्स है? नो, दोनों पे ही फ्लावर्स नहीं है. सो ये चीज इनमें सेम हो गई. और स्टेम जो है वो दोनों का डिफरेंट है, दोनों के लीव्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है. सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट दिस वर्कशीट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम टू नोट डाउन योर होमवर्क. फॉर होमवर्क यू विल डू होम एक्टिविटी नंबर 3 given on page number 100. So my dear students, this is home activity number 3. It states that what else do you find different among plants? Observe and compare leaves and stems of different plants at your house. Make a chart of your observation. Okay my dear students, अब आपके घर में जो पौधे हैं उनके दरमियान में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उसके बाद आपने उसका जो है वो एक चार्ट बनाना है. नोट इट डाउन इन योर साइंस कॉपी, और उसके बाद जो है आपने उसको जो है क्लास में अपनी टीचर को चेक करवाना है. नेक्स्ट इज टाइम फॉर रैप अप. सो टुडे वी हैव लर्न्ड दैट plants are different in different features. Some are small while some are large. Stems of plants, some plants are thick and woody, but some are thin and green. Some bear flowers, but some have not. Some have small leaves, but some flowers have big leaves. Some plants. Some plants grow at dry places, but some at moisture place. So my dear students, this is how plants are different from each other. Okay my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture और आपको plants के दरमियान differences पता चल गए. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.